वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं जहाजेब अली। जैसे कि आपको मालूम है कि नवंबर इलेक्शंस का जो माहौल है वो बहुत ही गर्मा गर्म माहौल है और वक्त गुजरने के साथ साथ जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। सदर ट्रंप के तुंदो तेज बयानात, कोरोना वायरस की मुश्किलात और फिर वोटिंग का मामला, ये सारे ऐसे मामला हैं जिस पर रोजाना के मामूल के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और कुछ तथ्यकार ये कहते हैं कि जो नया इलेक्शन होने जा रहा है नवंबर 3 का, ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का दरमियान इलेक्शन नहीं बल्कि सदर ट्रंप और उनके मुखालफिन के दरमियान एक इलेक्शन होने जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए आज बहुत ही जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है और सारी खवातीन है आज इस हमारे पैनल के अंदर। सबसे पहले मैं तारुफ करना चाहूंगा मिस रिफत चुगताई, जो कि नेशनल बोर्ड मेंबर हैं पाक पैक की। उनके साथ मौजूद है सदफ जाफर, जो कि मेयर हैं मॉन्टगोमरी टाउनशिप न्यू जर्सी की, फर्स्ट साउथ एशियन खातून है और फर्स्ट मुस्लिम खातून है जो कि न्यू जर्सी की मेयर मुंतखब हुई। साथ मौजूद है प्रोफेसर अमीना जिया, जो कि फॉर्मर पॉलिटिकल अपॉइंटी है विद सेंट लुइस गवर्नमेंट और आजकल यूएन के साथ भी काम कर रही है, यूएन रेप है। और आखिर में तारुफ कराऊंगा सुंबल औरंगजेब, जो कि यूएस कांग्रेस में काम कर रही है कांग्रेस वुमेन जॉनसन के साथ। तो बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने का। रिफत, आपसे गुफ्तगू में बात करना चाहूंगा, बाकी ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये सदर ट्रंप और उनके मुखालफिन का इलेक्शन है, पार्टीज का लगता कुछ इस तरह से है। अगर आप लोग वॉच कर रहे थे डीएनसी की कन्वेंशन, उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो कि एंडोर्स कर रहे हैं बाइडेन को। और कल ही मुझे न्यूज मिली कि हमारे चार्ली डेंट जो वहाँ के पेंसिल्वेनिया के हैं, एक्स कांग्रेसमैन, he has also endorsed Biden. So this is actually not a battle between Trump and others. This is a battle between people who are righteous and people who are for themselves. So I think उस लेवल पे अगर हम बात करें तो हमें लगेगा कि टिल्ट किस तरफ हो रही है। Is Biden representing a majority of the Americans in their thought process and their thinking? Is Trump representing the majority of the Americans who think the same way? America, आपको पता ही है कि it was the beacon of human rights and liberty and freedom. तो लोगों को ये देखना है कि कौन इस चीज को represent कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। We have to bring our country back to that point again. आप जो बाइडेन के साथ भी काम करी, वुमेन फॉर जो बाइडेन, क्या आप पेंसिल्वेनिया वुमेन फॉर जो बाइडेन, करेक्ट जी। उसमें ये है कि जैसे आपने देखा है, आपका पैनल भी सब औरतें हैं। औरतों का बहुत बड़ा रोल है इलेक्शंस में, चाहे वो पाकिस्तानी अमेरिकन औरतें हों या कि जनरल मेन स्ट्रीम अमेरिकन औरतें हों। अभी मेरी बात हो रही थी अपने डीएनसी के कम्युनिटी के क्लब के मेंबर्स के साथ। मेजॉरिटी औरतें थीं जो कह रही थी कि हमें एक अपना विक्ट्री सेंटर बनाना चाहिए इन ऑपोजिशन टू द ट्रम्प विक्ट्री सेंटर। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ रीजन व्हिच इज प्राइमरीली अ ट्रम्प रीजन। रिपब्लिकन रीजन है, ट्रम्प रीजन है, तो उसमें भी औरतें ही हैं जो कि बहुत रोल प्ले कर रही हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो इस वजह से पेंसिल्वेनिया यूएस वुमेन फॉर बाइडेन, they are leading a lot of new initiatives. वोटर रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। सदफ, आपसे पास आना चाहूंगा, आप तो खुद इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं, आप इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या होने जा रहा है नवंबर 3? लोग कहते हैं, कुछ लोग जो ट्रम्प के साथी हैं वो कहते हैं ट्रम्प बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, जो बाइडेन के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, जो बाइडेन बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? आप न्यू जर्सी में बैठी हुई हैं, आप खुद इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, आपका क्या एनालिसिस है सारी सूरत हाल? Well, जो majority Americans हैं वो Democrats हैं, और पिछले इलेक्शन में भी popular vote के हिसाब से Hillary Clinton was the winner. लेकिन यहाँ के जो electoral college है वो ज्यादातर रूरल इलाके जिनमें इतनी तादाद नहीं है वहाँ उनको ज्यादा पावर देती है। तो we have to see that those states that have lower population, which direction they're going to go. मेरे ख्याल से if it's a free and fair election, Joe Biden आसानी से जीतेंगे। लेकिन Trump is trying every single thing कि ये fair election ना हो, और जो population है वो
शक में पड़ जाएं कि is this fair, or is our election system rigged, is the post office rigged, is everything rigged, is the media rigged? And he's gone so far कि एक extremist group है जिसका नाम है QAnon, बिल्कुल I mean senseless ideology है। सदर ट्रंप की तारीफ की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ की थी सदर ट्रंप ने, उन्होंने कहा मैं उनको पसंद करता हूं कि वो मुझे पसंद करते हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट। Exactly. So I mean it's very difficult जब एक इंसान का कोई he doesn't care कि I don't care how I win, you know, like और दूसरे लोग जो हमारे साथ हैं जो Democrats हैं, we're trying to be very ethical, और हम rules के हिसाब से we're trying, so we'll see. I mean, once if you have a bully, if you have someone who's willing to be a dictator, I mean, he said that I don't think I would want to stay in power for a third term. I will want to stay in power longer. We have to see. It's very scary time. The next 2 to 6 months are going to be very crucial for the democracy in the US. अमीना, सदफ का कहना है कि जो बाइडेन बड़ी आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। एक तो आपसे पूछना चाहूंगा वो क्यों इतनी आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, और दूसरा लोग कहते हैं कि सदर ट्रंप ने अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसको मुकम्मल तौर पर चेंज करके रख दिया है। आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से अमीना? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि I think it's important not to take anything for granted. हमें ये before we dive into this strategies about elections and things like that, हमें एक बहुत छोटी सी basic चीज़ है जो understand करनी है, वो है कि the recent politics of elections has really reflected a very entrenched story of polarization in the United States. और ये कोई इस election की से नहीं start हुआ, since the 2000 Bush-Gore election, researchers observe करते आ रहे हैं, especially in political science, which is my field, कि each side has continuously vocalized repeatedly कि this election will determine the fate of US democracy, whether it was in 2000, 2004, and so on. लेकिन what we have seen, मैं कहना चाहूंगी, in the last 4 years, is that the Trump campaign and leadership has successfully embraced the divisiveness in the country to its own advantage for its campaign, right? And then today we're standing at the point where the polarization has just been amplified to new levels. So the country is still very divided. Sadaf ne baat ki aur bahut achhi baat ki, rural America versus most of the urban voters ki, and that is the reality of the United States, and that has been the reality for the last 2 decades. So हमें ये चीज़ बहुत सोचने की एक बात है। आज मैं पढ़ रही थी सुबह, the new polls showed that 90% of self-identified Republicans still support Trump. And 60% of Biden supporters say that they are supporting Biden as a vote against Trump. And I think Riffat maybe is a little bit hint diya tha as she spoke. So we don't necessarily have Biden supporters, but we do have supporters for Biden against Trump. So ये distinction जो है मैं समझती हूँ कि बहुत एक important distinction है, and it is severely downplayed. और once हम ये point understand करेंगे, internalize करेंगे, accept करेंगे, then only I feel कि we can map out and strategize a direction जो impactful engagement or participation की direction में होगा, especially within the diaspora level. लेकिन जो बातें आप अमीना कर रही हैं, यही तज्जिए, यही एनालिसिस हमने 2016 में भी सुने। लोग कहते थे कि ट्रंप जो है इस मुल्क को डिवाइड कर रहे हैं, वो बड़े रेसिस्ट हैं, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो जीत गए, वो सदर बन गए। और अब जब दोबारा से 3 नवंबर के इंतखाबात होने जा रहे हैं, वही बातें, वही एनालिसिस और वही सब चीजें हम देख रहे हैं। तो सुंबल, आपकी तरफ आऊंगा। ये बातें तो हम बहुत अरसे सुनते आ रहे हैं। 2016 में भी यही बातें थी कि सदर ट्रंप इस मुल्क को डिवाइड कर देंगे, वो रेसिस्ट हैं, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन जीत गए और अब भी यही बातें हो रही हैं। Yes, no, you're absolutely correct that those are the same things that we heard in 2016. I think that the difference that we can see now is the shift in Republican voters. Republicans themselves have also been very vocal about their opposition to President Trump, whether it's through organizations like the Lincoln Project, which are Republicans which are dedicated to bringing the end of the Trump administration, or if it's former national advisors that were Republicans. As Riffat was mentioning before, at the Democratic National Convention, we had Colin Powell, we had very high-ranking Republican officials speaking in favor of voting for Biden.
And again, I can't remember who mentioned it, but someone mentioned that we can't take it for granted. That's the other thing. So in 2016, we took it for granted. We were all sitting around thinking, like, of course Hillary Clinton's going to win. Donald Trump is so goofy. How could he possibly win? But we're not doing that this time. Even though all the polls are showing, Sadaf polls, and they're showing that Biden is ahead, it doesn't matter. We were working to help get Democrats elected, are going full force. We're completely dedicated to the cause. लेकिन रिफत आपने खुद देखा होगा सदर ट्रंप ने अपने तमाम वादे तो पूरे किए हैं, जो भी थे वादे, वॉल बनानी थी उन्होंने वॉल भी बना दी, उन्होंने मुसलमानों पर पाबंदी लगानी थी मुल्कों पर वो भी लगा दी, उन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा करनी थी उन्होंने वो भी कर दी, तो वादे तो अपने सारे पूरे करते आ रहे हैं, तो उनका जो वोट बैंक है वो तो वही मौजूद है। वो जो वादे थे वो रेगुलर रिपब्लिकन के लिए नहीं थे, उनका जो बेस है एक जो कि कुछ भी वो कर लेंगे, चाहे वो किसी को मर्डर कर दें, they will follow him and they will agree with him. इस दफा फर्क ये है कि जो लास्ट टाइम, वही अब सब पैनलिस्ट ने कहा है कि लास्ट टाइम रिपब्लिकन्स ने सब ने उनको दिया था, बल्कि यहाँ तक कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स ने भी उनको दिया था बिकॉज ऑफ देयर ऑपोजिशन टू हिलरी क्लिंटन। मैं अब दोनों कैंपेन्स में, हिलरी की कैंपेन में भी इन्वॉल्व थी और बाइडन की भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। जमीन आसमान का फर्क है। आप डेमोग्राफिक्स ले लीजिए, आप अभी हम औरतों की बात कर रहे थे, suburban women are with Biden, black women are with Biden, brown women are with Biden, and we are not even talking about the men. There are a lot of men also who are with Biden, except for the suburban men, उनमें थोड़ा सा उनकी वोटिंग कम है। लेकिन क्यों है ये? इसलिए कि बाइडन कैंपेन का रीच आउट बहुत वास्ट है, उन्होंने वास्ट नेटवर्क फैलाया है, और वो कहते हैं ना बिग टेंट, ही हैज क्रिएटेड दैट बिग टेंट जिसमें हर एक को वेलकम कर रहे हैं वो, इन स्पाइट ऑफ सम ऑपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ हिज ओन कैंपेन, वो हर एक को आ रहे हैं। अब बहुत ऑपोजिशन थी कि रिपब्लिकन्स को क्यों टाइम दे रहे हैं आप डीएनसी कन्वेंशन पे, पर उन्होंने दिया because he is an inclusive president, is going to be an inclusive president. Compare उनकी हिस्ट्री देख लीजिए आप, सेनेट में जब भी कोई इशू होता था जिसमें रिपब्लिकन्स की जरूरत पड़ती थी वोटिंग में, चाहे वो प्रेसिडेंट ओबामा हो या कोई भी, वो बाइडन या क्लिंटन हो, वो बाइडन को भेजते थे कि जाओ यार तुम अपने रिपब्लिकन कॉलेज के साथ बात करो and bring them on board. And he had this magic of doing it. उनकी अब हम बात तो करते हैं, डीएनसी ने थोड़ी सी मेरे लिहाज से गलती की है कि they focused on his humanity and his empathy and his kindness and inclusiveness. वो भूल गए थोड़ा सा उनकी पॉलिसीज पे बात करने के लिए। प्रेसिडेंट ओबामा है सिर्फ जिन्होंने बाइडन की पॉलिसीज पे बात की है दुनिया में, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी ले लीजिए, चाहे वो कोई पेंडेमिक को ले लीजिए, चाहे वो आप इश्यूज, वर्ल्ड इश्यूज जो हेल्थ इश्यूज हैं उनकी बात कर लीजिए, इबोला को उन्होंने इस तरीके से हैंडल किया, और प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है, मेंशन किया है कि he made Biden in charge of that. Then ये जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उसमें भी प्रेसिडेंट ओबामा ने बाइडन को इंचार्ज बना कि वो लोगों को कन्विंस करें all over the world. So he's a man that is very well respected all over the world, not just in this country. But coming back, कि voting तो हमारी country में होनी है ना, coming back to the delegates, that is the big issue. लेकिन यहाँ पर एक मामला जरूर है कि लोग यहाँ पर ये बात कहते हैं कि जब मिड टर्म इंतखाबात हुए, हमने रिजल्ट्स देखे, उसके डेमोक्रेट्स को बहुत ज्यादा वोट मिले, जो इंतखाबात होते हैं मेयर्स के होते हैं, डेमोक्रेट्स जो है वो जीत जाते हैं, सदफ खुद डेमोक्रेट हैं ये जब मेयर इलेक्ट हुई, लेकिन वो कहते हैं कि जब सदारती इंतखाब होता है तो उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। मिड टर्म में तो डेमोक्रेट्स ने सीट्स ले ली, हाउस का कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन जब प्रेसिडेंशियल इंतखाब आएगा तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। सदफ, आप इत्तेफाक करती हैं इस बात में? डू यू एग्री? I'm just afraid कि, I mean, 2000
18 तक मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि ट्रम्प वन टर्म प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन उसके बाद आई नोटिस्ड कि लोग बहुत थक गए हैं, they're overwhelmed, इतना like death, disease, so much bad news, misinformation. तो I'm not sure कि जो energy 2018 तक थी, if we're still going to have it, but lately DNC conference के बाद I'm more confident कि लोग ज़्यादा excited हो गए हैं, और definitely Kamala Harris को select करके, especially suburban women, women in general, minority women, बहुत excitement हो गई है. तो I think it'll be okay, but as I said, it has to be that that we have as free and fair elections as possible. एक जो issue थी जो conference में they focused on was Biden's work on the Violence Against Women Act. And I think that was very powerful and moving. And I hope that they keep sharing that video over and over. And I've been trying to, कि जो clips थी conference के, I keep sharing them. They had a Pakistani American Independence Day event. And that was wonderful, with doctors from the Pakistani community talking about the horrible things they've seen in the COVID situation in the US, and how this is all because of the terrible policies that Trump had, and how Biden's going to have a different solution. So I think it's true, we have to focus on policies, and I'm just hoping for the best for the next few months. नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. तो हमारी गुफ्तगू हो रही है यूएस इलेक्शंस और इलेक्शन का माहौल. रिफत, आपके पास दोबारा आना चाहूंगा. आज अभी कुछ देर पहले ही एक जबरदस्त बयान देखा सदर ट्रंप का. वो कहते हैं कि एफडीए जो है वो सियासत कर रही है, और एफडीए नहीं चाहता कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इलेक्शन से पहले आए. इस तरह के बयान सदर ट्रंप क्यों दे रहे हैं आपके ख्याल में? वेरी ऑब्वियस आंसर. पर मैं सिर्फ यही कहूंगी कि वो तो कहते हैं कि ड्रग कंपनीज भी उनके खिलाफ हैं बिकॉज ऑफ दिस, और वो तो ये भी कहते हैं कि सारे दिस डीप स्टेट्स विद इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो सब कंस्पायर करें उनके अगेंस्ट. पर एफडीए बहुत अपहिल बैटल है उनके लिए भी, सीडीसी के लिए भी बहुत अपहिल बैटल है. आप देखते हैं डॉक्टर फाउची जो है वो बहुत मुश्किल में ये सारे लोग हैं इस वक्त. एंड I salute to all these people जो common man है उसको truth बता रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. हमारे उनके बातों से जो elections पे इतना impact नहीं आएगा. वही लोग जो पहले भी उनको कहते थे कि कोविड तो कुछ है ही नहीं. मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ. एग्जाम्पल, मेरी अपनी हाउसकीपर है जो कि like Ameena was saying, रूरल एरिया से है, रूरल एरिया ऑफ पेंसिल्वेनिया, और वो मुझे आके कहती है कि what is this COVID? Because I told her put on your mask, and she said there's nothing that's COVID. What is COVID? Nothing. And she said, do you know anybody who's had COVID? And I said, yes, of course, many people, because my husband's a physician and family में बहुत लोग हैं. So we hear about, every day we hear about some patient dying of COVID, and all the issues, PPE issues, and all the issues that are very prevalent. तो वो उनके जो वो followers हैं जो denial में हैं, जब तक खुदा न खास्ता उनमें से किसी को नहीं होगा, वो नहीं believe करेंगे इस चीज को. मैं आपके ख्याल में सदर ट्रंप एक बहाने तलाश कर रहे हैं कि अगर वो इंतखाबात हार गए तो वो कहेंगे कि ये कोरोना की वजह से हारा हूँ, या मेल इन वोटिंग वजह से मैं हार गया. तो ये बहाने आपके ख्याल में जो बनाएंगे बाद में? बहाने भी नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है ताकि लोग उनकी जो इनएप्ट एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर फोकस ना कर सकें, कि वो किस तरह से काम नहीं कर सक रहे, मैनेज नहीं कर सक रहे. छोटे छोटे मुल्क, पाकिस्तान जैसा मुल्क ने भी मैनेज कर लिया है कोविड को. सदफ, मेल इन वोटिंग में किस फ्रॉड का खदशा है? कोई खतरा नहीं है. ट्रम्प खुद मेल इन वोटिंग के जरिए वोट करते हैं, तो इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज. और वो चाहते हैं कि लोग बिल्कुल इलेक्शंस को ट्रस्ट नहीं करें, वोट नहीं करें, और फिर वो कह सकते हैं कि इतनी कम टर्नआउट थी तो इट्स एन इनवैलिड इलेक्शन, और 4 साल में हम दोबारा ट्राई करेंगे. आई थिंक ही जस्ट it's all lies. I mean, but he doesn't care. और ये अफसोस की बात है कि उनको followers they trust him. और
मेरे शहर में भी मुझे कहते रहते हैं कि you are spreading misinformation that mailer fraud is not an issue. अब मैं क्या कह सकती हूँ? I just have to say, well, I'm sorry you feel that way, but you know, these are all the studies. They all show कि voter fraud America में it's not a big problem. और mail-in voting तो हर साल you can request one. तो अगर दूसरे सालों में कोई problem नहीं था तो इस साल क्यों? It's just a distraction, or we have to try to build community and bring people together and bring experts that can say, no, this is not true. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ट्रम्प को फॉलो करते हैं they don't believe anyone else, क्योंकि वो सोचते हैं कि CDC is against him, FDA is against him, media is against him, it's all a conspiracy, and I don't know, it's very hard to reach those people. सुंबल, आप तो यूएस हाउस के अंदर कांग्रेस वुमन के साथ काम कर रही हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज क्या है? हम मीडिया के ऊपर तो बयान देखते रहते हैं सब कांग्रेस अरकान के, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? क्या समझ रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अमेरिकन जो है वो अब मेल इन वोटिंग करने जा रहे हैं इलेक्शंस में? आपको क्या लग रहा है? Yes, absolutely. You know, as Sadaf mentioned, mail-in voting has always been something that that people take advantage of. It depends on the state what the rules are. So, for example, in Texas, as long as you're 65 and above, or if you're disabled, or if you are overseas, you know, these are all reasons that you can do mail-in voting. And personally, I think one of the reasons why the Trump administration is trying to disrupt mail-in voting right now is because it's often used by the elder population. And the elder population is such a strong guaranteed voting bloc. And I honestly don't think that they're especially impressed with the way that he's handled the pandemic. But it is an issue, honestly. I can tell you from personal experience, we get calls with people concerned about what's happening every day, and there's no concern about mail-in fraud. I mean, the only concern about fraud now is coming from the Trump administration through trying to manipulate the United States Postal Service, and that is real. And we're seeing in the news every day now that different Congress members. There was a member from Castro, Representative Castro from San Antonio, that the different United States Postal Service offices, that they're basically being misled. They're trying to hide from members of Congress what has already been done. मीना, सदर ट्रम्प के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब आप ग्रोसरी करने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं, जब वॉलमार्ट्स की लाइनों में जाके खड़े हो सकते हैं, तो वोट डालने में आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उनके जो हमायती वो तो मेरे ख्याल से सब जाके वोट डालेंगे। वो तो अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि आप आए, वो तो स्कूल भी खोलना चाह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि वोट आकर भी डालो, तो उनके लोग तो आएंगे वोट डालने। क्या ख्याल है आपका मीना? That's the reality. आपने बहुत अच्छी बात की. That's the reality, you know. और अभी रिफत ने, सदफ ने, सुंबल ने सब ने कहा कि you know it's creating a distraction, the whole mail-in voting system. It's about creating a narrative. और जो ट्रम्प के voters हैं, the Trump supporters, वो जाएंगे. They will go into the lines, and they are going to the grocery stores without masks, and they are going to the restaurants, and I can tell you they are. तो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, but again, it comes back to, you know, being accessible to the voters. So is the Biden campaign able to reach the average voter, reach the moderate voter? I think that is going to actually end up determining the election, because जैसे कि आपने कहा, Trump voters will be in that line. अमीना, आपके पास आगे के अब लोग ये भी बात कह रहे हैं कि सदर ट्रम्प अगर इंतखाबात हार गए तो वो व्हाइट हाउस से नहीं निकलेंगे। वो कह देंगे जी धांधली हो गई है और बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, दोबारा गिनती कराई जाए और फिर कोई पता नहीं क्या होने जा रहा है, या फिर कोई बुरहान आ जाएगा, सियासी बुरहान इस मुल्क में। आपको लग रहा है वाकई पॉसिबल है सदर ट्रम्प ये भी कर सकते हैं? Oh, absolutely. I mean, I think that would be quite an episode. लेकिन absolutely, Aurangzeb, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगी अभी जो रिफत ने, just to follow up on Rifat's conversation, कि you know rural America में अभी भी you know there is broadband internet access नहीं है. जहाँ मैं रहती हूँ, we do not even have digital access, which means कि उनको कोई data नहीं है. तो हम जो ये बात करते हैं कि there is this certain Trump's following, Trump support, ये conspiracy theories में क्यों believe करते हैं? Because उनकी जो अपनी situation है, that's not very good. हम because of the COVID-19 situation, schools virtual हो गए हैं. हमारे area में school buses जा रही हैं with Wi-Fi, and they're standing in different neighborhood
locations में, ताकि जो बच्चे अपने घर में बैठे हैं through the hours of 8 a.m. to 5 p.m. they can have internet access. I mean, हम इस दुनिया में रहते हैं. Where I live, and it's not just where I live, most of the rural America में 30% of school-going children are on free lunch, which means they do not have adequate access to food at home. So ये जो चीजें हैं, this is the reality of the American economy. This is the tragedy of politics today. कि हम immigrant integration की बात करते हैं, हम immigration policies की बात करते हैं, foreign policy की, unless the candidates start becoming accessible and start talking about policies जो Trump supporters को affect करती है, we're not going to see a change, unfortunately, because ये जो conspiracy theories only have a space there जहाँ उनको space मिल रही है to flourish, और वो उन्हीं households में मिल रही है, the households that are going through all of these difficult situations. असल सवाल कर रहा हूँ, जो conspiracy theories होती हैं, उनका कभी-कभी फायदा भी हो जाता है कैंडिडेट्स को. आप तो खुद इलेक्शन लड़ चुकी हैं, क्या कहेंगी? I mean, sentiment or emotions are very powerful. और जब मैं पिछली दफा जब मैं कैंपेन कर रही थी, तो जो रिपब्लिकन्स हैं वो कोशिश कर रहे थे कि मैरिजुआना को बैन करें हमारे मुल्क, हमारे टाउन में, और लोग बहुत, they were very against it. So I got to ride that wave a little bit because people said, oh, these people are crazy, we'll support her because they're just trying to pass laws for us. I don't think it's conspiracy, I think it's emotion. I would never want to move forward based on a conspiracy. And so, I don't think, for example, we should spread conspiracies either. I mean, I think sometimes people say, well, they do it, so why don't we just start spreading lies? And I just think you don't want to become what you're fighting against. It's very hard, but I try to, I don't call Trump an orange Cheeto, or I just try to keep much more serious. I don't try to make fun of Melania. I just think that misogyny or anything like judging people on their looks, it might feel good in the moment, but it's not the winning strategy. It's not what we want to build. But I think that the very important point that was made here was that we need to really accept that America is a very unequal place. And there's a lot of poverty in urban areas as well as in rural areas. And we have not done a good job in education. The reason why people are so gullible to certain, they'll believe a TikTok video. Some people in my town, they'll send TikTok videos saying that this is fact. And I try to share, well, here are some studies, here are BBC reports. And they say, oh, that's biased. My TikTok video is just as good as that. So we have to acknowledge that we have failed to some degree. And so we need to reach out to all those different corners of the US, whether in our towns or in our rural areas or suburbs, and make sure that people are getting the education and the resources that they need. So I think that's a very good point that, certain movements or things that affect urban areas more, like I think Black Lives Matter is more of an urban area issue, and it's very important. But we can't only focus on that. We have to talk about how are we going to help everyone. आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? हाउस में क्या डिस्कशन करते हैं मेंबर्स आपस में? आपको क्या लग रहा है? It just depends, for example, I work for a Democrat, so we say a Democrat, so we say it's going to be Biden. But I think that overall, from what I'm hearing from anyone else that I'm around with, working with, people are feeling pretty optimistic about Biden. Basically, we're under the impression that this is the end of Trump. And, at this point, honestly, more of the discussion has moved toward what we were mentioning before. Could Trump karega kya? Like, what is he going to do once it becomes clear that he's lost? And there's some real concern that, khuda na khasta ki koi, God forbid that there's some type of even maybe violence, or what exactly do we need to prepare for? But overall, we're pretty excited. The Democrats are excited that it's going to be Biden, inshallah. आप तमाम ख़वातीन का बहुत शुक्रिया. मुझे बहुत मजा आया, डिस्कशन हुई और हमने तफसील में बात की नाज़रीन के इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है, किसके चांसेस हैं इलेक्शन जीतने के. आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए जहाज़ेब अली को वाशिंगटन DC से इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.